मैंने उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोली. I said nothing to her. हमारी लड़ाई नहीं हुई and she was already saying this. So then I was like ये अब भी कह रही है चीजें. राम जी मैं तो हमेशा कहती हूँ say it, don't spray it because like literally moisturizer का थूक मेरे फेस पर हमेशा होता था जब मैं उसके साथ conversation करती थी. शिवानगी was very quiet, bless her, but she used to cry a lot. हर्षा तो overreaction की machine है वो तो. Hotness के साथ personality भी होनी चाहिए ना. I mean hotness के साथ hotness में हमेशा थोड़ी रहती है, वो भी expiry date हो जाती है सबकी. You know वो soap drama नहीं होता जो 20 साल पहले था. So she still uses the same facial expressions. वही चीजें बोलती है. Shreya was always, you know, जो guard dog नहीं होता. Guard dog on guard, completely like कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा. One was जब विनी आई थी जब वो सोच रहा था वो अपने टांग के साथ एक मेटल बार को किक कर देगा. जो हमारा शो था इंटरव्यू था that was the most viral. Pam and Teja, we were the most viral in this. या तेजा आएगी, if तेजा नहीं आ सकती, if she's shooting or not yet, then Karan आएगा. वो दोनों में एक तो आएंगे मेरे लिए. तुम कोर्ट पास से जा रहे, पॉडकास्ट पे जा रहे हो और मुझे कोई गोली चला देगा, मार देगा, मेरी लाश देखोगे रियाज. पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो? Don't worry, don't chill out. I'm telling you, but help me out here now. किसने बंदूक थोड़ी रखी है सर के ऊपर से भी ये बोलो, उन्होंने खुद बोला है. भाई बहन का रिश्ता है उनका. बिना कोई मुद्दे से कोई बंदा आके मेरे पर चला रहा है in my face like a second away. मैं provoke नहीं कर रही थी वो चीज, वो खुद आ रहा था मेरे पीछे. अभी तक भी मैं कह रही हूँ at that time I felt unsafe. शिवांगी भी she is not a sore loser that वो hug नहीं किया, वो बैठ गई वहाँ पर जाके. वो sore loser नहीं है. मेरी शादी हुई नहीं है अभी तक. They had no बच्चे भी नहीं है तो कितना शो करते हैं. बिजनेस मेरा लंदन में है so इतना दिखा नहीं सकते थे. They needed to see my lifestyle. उसमें they asked AP can you be an appearance और ex को ही दिखा देते हैं. हेलो एंड वेलकम टू ओ तेरी प्रेजेंट्स बकैती अनलिमिटेड. मैं हूं अक्सा अकबानी सिद्दीकी. आज के इस पॉडकास्ट की जो गेस्ट है वो है हॉटनेस की दुकान, एक्सप्रेशंस की भरमार और गुड लुक्स की भंडार. कॉल हर पम्मी, पैम और आवर फेवरेट पू. पैमेला, वेलकम टू टेली चक्कर. थैंक यू सो मच. आप पमोला भी भूल गए हैं. पमोला, हैशटैग पमोला भी भूल गए आप, जो मेरा नया नाम है. पैमेला, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले हमारे प्रेजेंटिंग पार्टनर ओ तेरी के बारे में बात कर लेते हैं. अगर आपका वीक भी वर्क, ट्रैवल, कॉलेज या मीटिंग्स में निकल गया है तो वरी नॉट. ओ तेरी ऐप ट्राई कीजिए. ऐप से पिकअप शेड्यूल कीजिए और डोर स्टेप पर फ्रेश कपड़े पाइए. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है. पहले तो ये हैशटैग से शुरुआत करते हैं. कितना क्या रिस्पॉन्स रहा और जो पमोला ट्रेंड कर रहा है ऑन इंटरनेट, टेल अस अबाउट इट. मैं तो सबके साथ ही ट्रेंड कर रही हूँ मुझे लग रहा है. हाँ, कभी मैं वरुण के साथ हूँ, लैला के साथ हूँ, फिर मैं चमोला के साथ हूँ, पमोला बन गए हैशटैग. एंड देन आई एम विद अर्जुन आल्सो एंड देन आई एम विद Now recently with योगेश also. तो मैं तो सबके साथ ही ट्रेंड कर रही हूँ मुझे लग रहा है. सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आप ही है. So everyone wants a piece of Pam. Wow. But what's the love like? क्या feedback मिला है अब तक का? What do you have to say about it? Honestly saying, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. I did not expect this much love. जनता से इतना प्यार मुझे मिला है. Every time I'm out anywhere, everyone says you're the most entertaining, the best person to watch on the show. We loved you so much. Lock Up was you, so I didn't expect this much love. The thing is, जब आप शो पर होते and you're filming, generally ये तो captivating reality show मेरा पहला था, but when you're shooting camera होता है, आपको पता कौन से एंगल पर आप खड़े हैं, what you're going to be doing, कौन सी सीन है. So when there's 116 cameras, you don't know what's capturing what और कोई एंगल है, क्या डालेंगे वो अंदर, एडिट में क्या डालेंगे, how you gonna look. So जो मैं कर रही थी, these scenes that I was giving in the sense I was talking, being me, naturally me, that's me. ये मैं ही हूँ. I'm sarcastic, I'm funny, I'm entertaining, I'm banter. Like मैं हमेशा सबको हंसाती रहती हूँ. So the thing is, when I'm making everyone laugh, I'm doing all this drama entertainment. मैं खुद को भी entertain करती हूँ. I had no idea they're gonna put all this in. तो मुझे याद भी नहीं था ये. So जब मैं 5 हफ्ते बाद निकली हूँ, I'm just like taking my makeup off and I'm like, तू बड़ा 21 साल की है, मैं हंस के बोल रही हूँ. बावजूद लड़ाई थी हमारी, we were fighting. And I should have been angry, but I'm laughing at this stage. So this is my personality for sure. And I'm so happy that I was naturally like this because I think Desi Bling mein, I was a complete Kamalika this round. I met Kamalika, by the way, at the award ceremony, and she's beautiful. I'm like, wow.
What a legend. Yeah. Mm. ओके तो बट यू नो हमने जैसे वी स्टार्टेड ऑफ अपने देसी ब्लिंग की बात की देसी ब्लिंग में यू नो आपका जो राइवलरी था विद तेजस्वी एंड करण काफी ज्यादा टॉक्ड अबाउट था यू नो उसकी वजह से ऑडियंसेस ने थोड़ा सा ट्रोल या हेट कमेंट्स भी दिए रहेंगे बिकॉज तेजरन फैंस आर यू नो वेरी अग्रेसिव Yes. अभी क्या इक्वेशन है पहले तो वो बताइए दोनों के साथ तेजस्वी एंड करण के साथ Teju. Teju. Okay, things are very good between us. ओके बिल्कुल ठीक है. We sorted everything out. Actually, I flew out for her birthday. ओह कल भी मेरे साथ थे Karan and Teja. Okay. We went for dinner in Bastion, Juhu. And we've been together. We're in touch. We're spending a lot of time together. We're good friends now. But I have to say that India की जो fan page है, India की जो fans are so loyal. इतने loyal fans मैंने कभी नहीं देखे honestly, and I'm so happy that I've become part of this. and मेरे खुद के भी fan following यहाँ पर हो चुके हैं because yes, if you go against anyone, they don't like you. Oh my God, the fans are so loyal. इतने loyal fans मैंने जिंदगी में नहीं देखे. बट And तेजरन I'm happy to be part of it. हाँ. या तेजरन फैंस ने कुछ बोला हो जो आपके दिमाग में छप गया हो कि ये क्या कह दिया ऐसा कुछ हेट कमेंट No, not really. I mean, हमारे काम में ये that you can't let things affect you like that and Yeah. bother you so much. True. I had some hate. It was more like don't say this to Teju. ये मत करो, ऐसे मत बोलो. But obviously now they've seen we're together. I had the same with also थोड़ा सा मुझे वरुण के साथ भी था. या But obviously I don't see my page so much in that sense, you know. So any bad comments, our assistant just takes it out. But abhi now they know that we're together. So you know, in a show and जब आप काम करते हैं साथ, you're gonna have the up and downs, you know. लड़ाइयाँ भी होंगी, प्यार भी होगा, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे. It's this part of circle, and the circle of life ये होता है जब कोई चले भी जाता है, वो वापस इधर ही आता है. राइट It's part of the circle of life. ये human nature है. तो मैं ये कहना चाह रही थी, even in lockup, जब हम साथ हैं, it's like although you're working together, you're doing scenes together, but 5 हफ्ते दिन रात किसी के साथ रहना, वो ना वो पूरा kind of like it just becomes like a family also. Yeah. Because you know you get used to it. Yeah. जैसे हम अपने भाई बहन के साथ रहते हैं तो लड़ाई तो करते हैं ना, Yeah. and then we fight again. Yeah. And then we fight again. So this is the thing. But if I was with my sister, हम तो लड़ लेंगे, but और कोई उसको बोलेगा कुछ, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी. So I think it's the same with all of us now. We've kind of become a tight bond. Right. But Desi Blink के बाद did any confrontation happen between Tejasvi and Pamela कि you know तूने ये बोला था, तूने वो बोला था, ऐसा कुछ छोटा मोटा confrontation हुआ दोनों के बीच में? of course हुआ था. और अभी तभी ताने मारते हैं हम एक दूसरे को. अच्छा किस बारे में part थोड़ा of कुछ? journey. Lots of things, everything that was said. कई काफी चीजें edit में नहीं आई. Okay, जैसे कि Behind the scenes जो हम लड़े थे, but it's been obviously I'm like, you know, तुमने ये बोला था, but at that time as well, Teja didn't know me that well. Yeah. So now obviously we become friends. We've been hanging out. 1 साल तो हो गया हमारी दोस्ती को. अच्छा So 1 साल हो गया, हाँ. And in that now she knows everything about me, you know. Yeah. What I'm doing, कौन है, कौन नहीं है. हमारी जो friendship थी, it wasn't we had a problem with each other. Yeah. It was more because ये twins के साथ दोस्त बन गई थी, and एक twin I didn't like her. Yeah. तो उसमें वो एक झुंड में बन गए थे, 4 लोग, 4 लोग ganging up on me, and I was friends with Binda, तो Binda तो ना उधर की है ना इधर की है. Right. So ये तो है. So I was alone, and ये 4 mean girls ganging up on me at that point. But आपको भी पता है that whether it's 4 girls, whether it's 10, whether it's 20, Pam तो sticks up for herself. मैं तो you know जो सही है मैं तो खड़ूंगी. ऐसे मैं डरती नहीं हूँ at all. And if you watch the scene Desi Bling में at Sana's party, Sana की पार्टी में और आदिल की पार्टी में, Sana takes us on the stage and she sorts it out between me and her. So वो शो के अंदर ही sort out हो गया था, इसलिए मैं उसकी engagement proposal पर आई थी. That's why I came and supported that, because we were fine. I think this was episode 6 में हमने sort out कर लिया था. बट जब शट अप विद तेजस्वी शूट हो रहा था यू नो हमको लगा था काफी ज्यादा फायरवर्क्स होने वाले हैं. I think सबको यही सोच रहे थे. Tejasvi looked at me and she's like, I can't even fight with you. We can't even do any कलेश. She goes, मुझे देख के तरस आ रहा है. अगर तुम 5 हफ्ते from the lifestyle that तुम जीती हो, तुम यहाँ पर बैठी हो, and with the मक्खियाँ, the मच्छर and everything. She's like, I can't say nothing. Please just कुछ खा लो. You've lost so much weight. तुम इतनी weak हो गई हो.
At that point, yeah, so she couldn't have fought with me. वो नहीं लड़ती मेरे साथ. उसको पता था मैं काफी mentally distressed थी that point. Right. So she wouldn't have fought with me. but लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या हंगामा होगा, Mhm. what drama. But I have to say, Netflix is so smart, okay, that मेरा तो viral हुआ था Pomola because सतीश भी मुझे Pomola बोलता था. Oh. So मेरा hashtag Pomola ही हो गया. Then Pam, Pammi जो भी है. So that was on there. Hers was Shut Up. So Right. Netflix is so smart. They made a whole show. Yeah. Shut Up. Shut up with Tejasvi. It's amazing. It's amazing. How smart. What a good gimmick to use. Yeah. So उसकी show में this is जो हमारी reel थी, जो हमारा show था, interview था, that was the most viral. Yeah. Pam and Teja. We were the most viral in this. Wow. So that was हाँ. So we know. I'm glad to see the public want to see this. Yeah. Right. But जब visitors week था, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था शायद तेजस्वी को हाँ. नहीं लेकर आए. Yeah. Yes. I was 100% sure that Teja आएगी. या Teja आएगी. If Teja नहीं आ सकती, if she's shooting or not here, then Karan आएगा. वो दोनों में एक तो आएंगे मेरे लिए. I had no idea Lely was coming from Dubai. Yeah. But the thing is, Teja आती. If she wasn't doing Shut Up, but just be the show, Yeah. वो biased हो जाता. If वो नहीं करती, वो जरूर आती मेरे लिए. Yeah. She would have come on the show. Right. Mm. But लेली के साथ भी जो भी हुआ and बहुत warm लगा हमें. You were emotional also कि she supported you so much. Tell us Of about it. course, I mean, आप सोचो 4 हफ्ते, that was the 4th week. Yeah. 4 हफ्ते आप अंदर हैं, दिन नहीं देखा, टाइम का पता नहीं है, डेट का पता नहीं है, Yeah. पता नहीं क्या हो रहा है, खाना Yeah. नहीं अच्छा मिल रहा है, इतना and it was a very hard lifestyle to live. मेरे लिए adapt करने के लिए it was very difficult. Yeah. मैं नीचे सोना and most of the problem मेरे लिए ज़्यादा थी. चलो खाना भी ठीक है, मैं जी सकती हूँ खाने के बगैर भी. मैं इतना नहीं that I have to eat. Yeah. So I'm not a big foodie like that. For me, mostly it was OCD. The hygiene level जो था मेरे लिए and ये जो मक्खियाँ and cockroaches and ants ये मेरे से में नहीं, I couldn't do it. I was mentally distraught. नीचे सोना. I'm pretending like कोई and I used to sleep in the middle ना. I said to everyone तुम लोग यहाँ सो because if कोई cockroach आएगा he'll have to go over you guys to get to me. Strategy. मैं corner में होंगी. There's something anyway those big ones and I was like look मैं middle में सोऊंगी because then if anything has to come it'll come via you guys. मेरे पर नहीं पहुंचेगा. Yeah. So that was the only like stability I had to sleep otherwise मैं नहीं सो पाती. So मुझे full OCD था. Right. Completely. It was so hard for me. Yeah, but with Lely coming in as a visitor, how was it? क्योंकि you expected some maybe fireworks क्योंकि थोड़ा सा rivalry भी था. हाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था but that's what I'm saying at that point I was feeling so overwhelmed and emotional that even seeing Lely it was like I'm seeing a familiar face Yeah. So I was like, at least कोई तो है तो मुझे जानता है. I can hug and say hi. Yeah. I can hug and say hi because obviously it was a familiar face. At that point मुझे सिर्फ चाहिए था, मुझे comfort चाहिए था थोड़ा सा. Yeah. So I'm like okay चलो Lely भी है तो हमारी इतनी भी बनती नहीं है but चल ठीक है वो भी आ गई है मेरे लिए. Yeah. It must be a good thing. Yeah. इंटेंशन के साथ ही आई थी वो कि मेरे लिए कैवियर लेके आई थी. अच्छा कोई लड़ाई होती वो कैवियर ना लेके आती. फिर मैं समझ गई थी ये अच्छे अटेंशन के साथ आई है और कैवियर भी लेके आई पर उन जेलर्स ने लेने नहीं दिया, अंदर नहीं आने दिया, Oh. तो मैंने नहीं खाया. But saying that she came in that intention for sure and I saw her and then she gave me full good advice. Yeah. Support की मेरे लिए इतना अच्छा खेली. Actually she was one of the best that played well. Yeah. Have to say. Totally. Very हाँ. well. But also she gave you an advice also regarding Akanksha. कि Akanksha से थोड़ा सा you can distance and you can be more friendly with Shreya. और I think आपने उस advice को कहीं ना कहीं काफी उस पे work किया. What do you have to say? So जो आकांक्षा की issue थी मेरे साथ वो पहले मुझे पता चल गई थी Yeah. चिमोला के साथ. So already had this out with her. This was almost like 5-6 दिन हो गए थे. Yeah. So मुझे पता था obviously ये चीज हुई है, ये बात हुई है. She said things and we sorted it out. And उसको sorry मुझे बोल चुकी थी by Right. that time. जब तो Right. ले ली आई थी sorry बोल चुकी थी. But I was keeping my distance a little bit because मुझे ना वो trust issues हो चुके हैं. Yeah. वो she broke my trust बिना वजह.
मैंने उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोली. I said nothing to her. हमारी लड़ाई नहीं हुई and she was already saying this. Yeah. So then I was like, if ये अब भी कह रही है चीजें, then I can't trust her. So I started distancing myself a little bit from her. Shreya तो हमेशा I was talking to, but even if it's 15 minutes a day or hard time I'm walking past हम बात करते थे, even if it was a few minutes. And I think जो last हफ्ता था सबकी फुस हुई पड़ी थी, कोई बाहर नहीं आ रहा था कमरे से, everyone was sitting quiet, playing safe. Yeah. Finale week and they were done and Yeah. dead. And then it was me thinking, अच्छा पर last week में मैं तो जा रही हूँ, तो मुझे रिस्क लेना है, अच्छा मुझे हंगामा थोड़ा सा करना है, Yeah. मुझे रिस्क लेना है. And I don't want to play safe. Because Yeah. I don't want to play safe and be the boring one that plays safe. I want to do something different. Yeah. So कोई है ही नहीं था. Even चमोला भी ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत खराब भी थी. कौन था? श्रेया ही थी वहाँ पर. Shreya and Shilpa had a fight. So then she was there. So मैं शिल्पा के साथ बात करती थी थोड़ा टाइम, श्रेया के साथ थोड़ा टाइम, सभी सारे हैंगिंग. एंड आपको तो पता है मैं तो मजाकी हूँ. So I like to joke around. मैं सबकी नकल उतारती हूँ. I've been doing this. I don't know how much they showed on the show. मैं पूरा सबकी नकल उतारती हूँ मैं. Wow. So, किसी एक की if you can do it, राम या राम. oh my God, I literally have everything about everyone. एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही लोगों की जो हैंड मूवमेंट है, जो बात करते हैं इतने हैंड मूवमेंट देते हैं. अपूर्वा भी, you know, she's always clocking it, Pachari. And then Ramji is always using his hands as well. And some extent Sufi also. So Yeah. many people use their hands when they talk here. I think facial expressions इतने देता नहीं जितने hands देते हैं यहाँ पर. So, Ramji, मैं तो हमेशा कहती हूँ, say it, don't spray it. Because like literally moisturizer का थूक मेरे face पर हमेशा होता था जब मैं उसके साथ conversation करती थी. Shivangi was very, very quiet, bless her, but she used to cry a lot. Harsha तो overreaction की machine है वो तो. Yeah. क्या नमूना है वो. Honestly speaking, he is like from one level to another. वरुण की हाइजीन पहले सोच लो, देख लो आप. मैंने तो सेल शेयर किया है इनके साथ, बट सुपर फनी, sarcastic. Yeah. But I think after 5 weeks वो jokes repeat हो गए थे. So I was like, अच्छा मुझे और fresh jokes दो, because you know you get bored after 5 weeks. Yeah. How was Shilpa? You know, जो हम देखा वो तो ठीक है 1 hour का, but how was it with Shilpa? Shilpa ji she's loud sometimes but very quiet also. अच्छा. So she had this like bipolar types. कभी कभी वो ठीक थी, बहुत प्यारी थी, sweet थी, Yeah. रोती थी, and the next minute she'll just be like, you know, like verbally attacking everybody. Yeah. And कोई पसंद नहीं है, she'll just do. She's like this typical like, you know, वो soap drama नहीं होता जो 20 साल पहले था. So she still uses the same facial expressions. वही चीजें बोलती है. Yeah. I think she used the very same approach she did in Big Boss. Which is fine because it worked for her. वो जीती थी and it worked for her then. So she probably thought my same tactics क्यों ना Yeah. use करूँ. Yeah. If public को पसंद था and everyone liked it, then I will use it again. Shreya was always, you know, वो जो guard dog नहीं होता, guard dog on guard, completely like कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, observant देखना है, इससे लड़ूं, इससे क्या बोला, attack करूँ, you know. She was always on that. I think वो सोती भी थी, एक आँख खोल के सोती थी, for sure. Dheeraj was very 2-3 explosions he had. One was जब विनी आई थी, जब वो सोच रहा था वो अपने टांग के साथ एक मेटल बार को किक कर देगा और उसको दर्द नहीं होगा. I don't know. Him, that was one. And जब वो blocks थे उसके ऊपर लगी थी, he went crazy and he grabbed all my blocks and threw them off. Yeah. I'm like, यार और भी blocks है, मेरे क्यों ले रही हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है. I feel he's not good for captivating reality TV show. He's more of a script soap person, just because he suffered as well a lot. मैंने देखा, you know, he was not happy. He was missing his family. He was really struggling. Oh. He needed to go home. And Sufi? Sufi was our cat with 9 lives. Okay. Yeah, a little pet in-house pet. Yeah, so he was always like, I don't want to be the first one to go out. And then he's like, I don't care if I go out. I don't mind if I go out. He was also suffering a lot. He was seeing the psychologist and the psychiatrist, seeing the physiotherapist and the doctor quite a fair bit as well. वो भी काफी ठीक नहीं रहता था. But he was okay in the sense में वो पलट जाता था. He'll play safe. And that was his strategy. It worked for him. It did wonders for him, which is good. Yeah. So that's a good thing, yeah. Of course, also I want to know about Rebel Kid. अपूर्वा की जो एंट्री हुई और इन्फॉर्मर वाला जो ट्विस्ट आया.
समथिंग ऑन दैट. नहीं हमें पता था. आई मीन हम बात कर रहे थे जब वो कह रही थी तुम लोग चुगलियां कर रहे हो हमारी. वी वर हाँ. ससिंग इट आउट दैट ये रैंडमली आ गई है एज अ वाइल्ड कार्ड. दे नॉट गोना पुट अ वाइल्ड कार्ड इन दे लाइक अ वीक बिफोर द Right. फिनाले, you know, the Hmm. ending of the show. तो कुछ तो है ये करने आई है. For sure she's come to stir stuff up because I Oh. saw it. She was very two-faced. Oh. इधर बात करके लड़ाई शुरू करके then she'll make it up and then she'll talk behind everybody's back, behind their back. So we sussed that out. I said हाँ कुछ तो है. We knew that. Oh. Me and Shreya were talking. So that's what I'm saying. हम पहले भी बात करते थे. It was me, अच्छा. Shreya and Jumola बात कर रहे थे. हाँ. And it was when Apurva came and she's like चुगलियां तुम लोग कर रहे हो मेरे बारे में. So we were trying to suss it out. हमें पता था. Oh. Wow. हमें हर चीज पता है. हर चीज हमें पता है. अच्छा, योगेश और आकांक्षा का जो बॉन्ड है, अभी तो वो लोग बोल रहे हैं that they are friends and all. Your views on it? There is a friendship. I think because of their fan following and जो चीजें हुई हैं और बातें हुई हैं वो they don't want to take it the next step maybe. Yeah. I think future में हो जाएगा. Hmm. I feel maybe. Okay. Maybe अभी नहीं 6 महीने में या 1 साल बाद हो जाएगा for sure. I think it's more because of what people are saying. Hmm. And I think with Akansha, she doesn't want to feel like the homewrecker. You know what I mean? Oh, किसी का relationship तोड़ा है, वो label नहीं चाहती. And Yogesh doesn't want the cheater label. Yeah. So I think they need to die that down. But if एक दूसरे के साथ feelings हैं, then the fan should support that, right? I mean, Yeah. हो जाता है कई बार, you know, life में हो जाता है. You're dating someone, you meet someone else, वहाँ प्यार हो जाता है. It happens all the Yeah. time. And they are very young, I think. Very It young, happens. yeah. And people get married and then they get divorced and they fall in love with like the Yeah. husband's friend or the wife's friend or जो भी है. So things happen. You can't help your heart. You can't help how you feel. जहाँ दिल जले जाता है, you cannot help that. You know, it just happens. So वो दोनों they just made me laugh because they're so much in denial that मैं उन दोनों को देखती थी. मैं तो बहुत चढ़ाती थी दोनों को. I found it somebody more मजा आता था when they look at each other. I say look and be whatever guys. But they should just laugh. Wow. Yeah, they should laugh. I like them both. Right. मुझे But बहुत पसंद है दोनों. जी, बट यू नो एक शिवांगी को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, यू नो, ट्रोल हो रही है. She's getting trolled so much, बेचारी. Yeah. What are your views? क्योंकि जो सेक्रीफाइस और वो सारा हर्षद और शिवांगी के बीच पे वो जो इवेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से थिंग्स सीम टू बी, यू नो, अगेंस्ट शिवांगी कहीं ना कहीं. What do you have to say? I think her gameplay was very bad. हम्म. I think both of the gameplay was super bad because otherwise if they had a strong gameplay and they thought things through तो ये नहीं होता. मतलब आप गेम में आए हो, आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आपको पता नहीं आप दोनों की सेम गेम में जा रहे हैं. Yeah. I mean, come on. Yeah. नहीं पता. ओह मुझे तो पता भी नहीं था शिवांगी तुम ऊपर बैठी हो. और वो तो पहले से शिवांगी was announced as a contestant earlier only, right? Thank you. हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे. Yeah. Me, शिवांगी and रामजी. Yeah. और आपको फिर भी नहीं पता था. बहुत बुरे एक्टर हो आप हर्षद. Naughty. But hot तो हर्षद बहुत थे, I think. What do you have to say? He जो is hotness very था. hot. Yes, Yeah. actually, all of them are very hot. Yeah. I have to say that all the girls are very beautiful and pretty, and all the boys were very nice and good looking. Harshad and Yogesh have great, you know, they work out. They have great bodies. वो तो है, मगर hotness के साथ personality भी होनी चाहिए ना. I mean, hotness के साथ hotness में हमेशा थोड़ी रहती है. वो भी expiry date हो जाती है सबकी, लड़कियों की भी. Right. But you have to have that personality. हाँ. वो तो होने चाहिए. So इन दोनों में they played the game wrong, I would say. She's getting trolled a lot because वो behavior ही इस तरह का था ना. पहले तो हर्षद और शिवांगी दिखे नहीं मेरे लिए. Yeah. First few weeks. And जब वो दिखे, it was almost हम बात भी, he never spoke. Even मैं तो हमेशा हर पर्सन से ट्राई करती हूँ बात करने के लिए to speak with them. शिवांगी के साथ भी मैंने कभी लड़ाई नहीं की. There was no problem with me and her at all. There was no problem with me and Harshad, but you could tell even मैं बात भी करूँ ना, he'll look at Shivangi and then she'll look at him and then he'll go off and I'm like, dude, हम घर में रह रहे हैं, we're just talking, chill मारो, conversation ही हो रही है, इतने डर क्यों रहे हो तुम? Wow. Okay. But शिवांगी और हर्षद का more than friendship योगेश और आकांक्षा जैसे ही आपको लगता है, या what is that equation? यार वो तो भाई बहन है. Come on now, क्या कह रही हैं आप? उसने बोला साहब मेरी बहन जैसी है. Yeah. मेरी बहन है ये. So हाँ, वो तो कहते हैं, खुद ही कहते हैं. But they बाद में उन्होंने of course they took it back, but
यार खुद बोला है चला चला के, मैं क्या बोलूं, मैंने थोड़ी स्टेटमेंट नहीं दी है, किसने Yeah. बंदूक थोड़ी रखी है सिर के ऊपर से भी ये बोलो, उन्होंने खुद बोला है ये, Yeah. भाई बहन का रिश्ता है उनका। ओके ओके ऑल्सो बहुत कम लोग थे इनमेट्स में से जिन्होंने श्रेया की विन पे उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बिकॉज वी कुड क्लियरली सी टू ग्रुप्स ओवर देयर। कुछ लोग ही गए थे श्रेया के पास उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने जब विनर अनाउंसमेंट हुआ था। टेल अस वो सीन क्या था? यार मैं ना जिंदगी में बड़े फिनालीज मैंने देखी हैं, बहुत ज्यादा फिनालीज देखी हैं, और ये शो ऑब्वियसली वे इन दिस शो, ये जो हाइप हो रहा था शो का, फिनाली वीक आ गई है। Yeah. कौन होगा फिर, टॉप 10 से हो गए टॉप 5, टॉप Yeah. 5 से हो गए टॉप 3, एंड टॉप 3 से हो गए 2, एंड कौन जीतेगा लॉकअप, कौन जीतेगा, फिनाली है, और फिनाली की 2 मिनट में फुस होगी जब अनाउंस हो गया विनर। This is what it was like. It was अच्छा। one of the worst finales I've seen. यार आप 2 लोग खड़े हुए and you at the pace and peak of winning, ठीक है, कौन जीतेगा, and you're closing your eyes and you're praying and whatever, and just pretend and hug ना, जो हम beauty pageants करते हैं, Sportsman sometimes we spirit, win, yeah. sometimes we don't win, और जो भी है in the situation, I've always hugged my opponent. True. True. यार नहीं हग करना, नहीं अपसेट pretend तो कर लो ना, हग करने के लिए कैमरा के सामने तो pretend कर लो। She walks off, मैं तो बड़ी खुश थी, of Yeah, course you could yeah. see, I think more than Shreya मैं खुश थी। Yeah. खत्म हो गया शो। We're at the end, finally Reasoning हो different थी गया। आपके लिए। Show is finished, yes। Yeah. This was my excitement, but also I was one of the 3 people that voted for Shreya. Australia, yeah. I voted for her, and Shilpa ji And and Madhuri. Madhuri ji ने वोट किया, बाकी किसी ने वोट नहीं किया। Yeah. तो मैं तो वहीं पर मजाक उड़ा रही थी श्रेया का, ऐसे देखो तुम्हारे पास दोस्ती नहीं है, तुम्हारे पास देखो, I said you pissed everybody off, Yeah. no one wants to be your friend, dude। Yeah. And she's looking at me, she's like ha ha ha, she's like I don't care, I won, so I was very happy for her। उसमें वो बेचारी, वो जब मैंने टर्नर मैंने देखा सब निकल गए, दे नहीं, लाइक वो नहीं होती जो वो कन्फेटी नहीं होती, जो फायरवर्क्स की कन्फेटी होती है, जो पटाखे होते Yeah, हैं फिनाली की विन की, हाँ। वो तो खत्म भी नहीं हुए, नीचे भी नहीं गिरे, सब इनमें से निकल पड़े थे। It was one of those, God. and I was like oh my god, and then at the end it was me and Shreya, हम बाहर आ रहे हैं सेट से, स्टेज से नीचे आ रहे हैं, तो एंड कोई बैक स्टेज प्रोडक्शन वाज लाइक कांग्रेचुलेशंस, आई सेड देखो कोई एक नहीं तो कांग्रेचुलेट तो मैं किया बाहर से, बी ग्रेटफुल। So मैं तो मजाक उड़ा रही थी, but saying that it was so bad in the sense where लोग मुझे कहते हैं so losers, Yeah. please guys, who's the sole loser now? I mean, I feel very Shivangi, that was a very loser act that you done. In fact, ये तो बहुत loser move था शिवानगी से, a big loser move you did, because honestly you are top 2, be grateful that you are top 2, it's Yeah. a big achievement anyway that तू 2 पर पहुंच गई, Yeah. for the input you put in the show, तो second पहुंच गई हो, it's a big deal, and it was a big loser move, I would say। Yeah. यार hug कर लो, pretend कर लो, जो भी है, but I don't know, and मुझे so loser कहते हैं, तुम लोग सब so loser हो, because that's a so loser move, Yeah. coming to the top 3 or top 2 and you're doing this। At least मैं तो खुश थी, and 15 जो like we done at least 15 tasks, and से 2 tasks में मैं लड़ी हूँ, and सबने मुझे so loser का title और tag दे दिया है, Yeah. but I didn't look like a so loser, otherwise मैं होती, I won't be screaming for her Yeah. and happy। ट्रू, बट एक जो आपकी फिनाले वीक में राम कपूर के साथ जो मैसिव फाइट हुई, हाँ। जहाँ पे ही वाज ट्राइंग टू फॉलो एंड पुट अ पॉइंट अक्रॉस, जिसमें फराह खान एंड रितेश वगैरह कॉल्ड यू आउट एंड प्रोबेबली पुट यू डाउन। आपको जब आपने मे बी टेलीकास्ट देखा होगा या बाद में, वो अभी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? Honestly speaking, listen, सबकी दोस्ती है यहाँ पर, ओके, एंड इंडस्ट्री में सब जानते हैं। Yeah. I was the outsider that came in first of all, तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ। When I saw that and I had to experience that from the jailers and everyone, is because उनकी friendship राम जी के साथ है, okay, 30 साल की friendship है। That doesn't mean that you stick up for them, what's right and wrong। मैं राम जी को जानती नहीं हूँ 30 साल से, I don't know anything about him। मैं 5 हफ्ते से जानती हूँ, and if बिना कोई मुद्दे से कोई बंदा आके मेरे पर चला रहा है in my face like a second away, and not for 10 seconds, it went on for 2-3 minutes,
And 2-3 minutes when someone's screaming at you that time, आप खुद ही देख लो, it's a long time. Okay, from all the lockup, okay, बाहर यार्ड तक तुम आए हो मेरे पीछे, जा नहीं रहे हो. And if चमोला और योगेश ने नहीं स्टॉप किया, तुम क्या कर देते हो? आ रहा ना, गुस्से में कोई भी कर सकता है कुछ भी. आप तो ये कह देते हो ना, कल किसी ने मर्डर किया था, मैं तो 30 साल से जानता हूँ, वो कर ही नहीं सकता मर्डर. कर दिया ना. मतलब it happens in life, right? Totally. You cannot vouch for someone's mental state. They've been in the house for 5 weeks. You can't vouch and say that ये बंदा मैं 30 साल से जानता हूँ, ये करेगा नहीं. So I felt this was very biased from the jailers, because at end of the day, आप ये ना देखो that तुम 30 साल से जानते हो किसी से, या आप 2 मिनट जानते हो. Understand the situation. मैंने उसको कुछ नहीं बोला to provoke him. कोई लड़ाई हमारे बीच में नहीं हुई है. In fact, I hugged him when he came out the task and said, well done. So हमारा कोई इसका कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें. The jailers should see that this man, if he's a public figure, पहले से why is he behaving like this in the first place? वो बच्चा थोड़ी है, उसको पता नहीं 116 कैमरे लगे हुए हैं. So why are you behaving like this in the first place? And then 30 साल की फ्रेंडशिप है, उसको प्लीज उसकी रेपुटेशन खराब मत करो, इसलिए यू आर सेइंग दैट आई एम प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. मैं कैसे खेल सकती? मैं थोड़ी उसके पीछे गई थी, वो मेरे पीछे आ रहा था चला के. He came behind me and I'm telling him, please stop, I don't want to hear it. Please stop, I don't want to hear it. इसमें मैं विक्टिम कैसे बनी हूँ? I would be screaming at him ना and saying, yeah, come on, provoking it. मैं provoke नहीं कर रही थी वो चीज, वो खुद आ रहा था मेरे पीछे. So and they should have told him off that he cannot behave like that to a woman. In the house, I felt unsafe. अभी तक भी मैं कह रही हूँ, at that time, I felt unsafe. And the jailers didn't do anything to protect me for that. In fact, they called me the victim and a sore loser. शिवांगी भी, शी इज नॉट अ सोल लूजर दैट वो हग नहीं किया, वो बैठ गई वहां पर जाके. वो सोल लूजर नहीं है. बाकी के लोग सोल लूजर जब लड़ाई करते हैं. ये बंदे का कोई मुद्दा नहीं है. व्हाई इज ही कमिंग बिहाइंड मी? एंड आई एम टेलिंग हिम नो, आई डोंट वांट टू नो. आई एम सेइंग नो. देन 3 मिनट इज अ लॉन्ग टाइम. एंड ओके, फ्रेंडशिप है, जो भी है, फ्रेंडशिप है या नहीं है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, दैट्स योर कॉल ऑन दैट. ना गुस्से में वो कुछ कर देता फिर, या और कोई नहा रोकता फिर, या और चमोला ने नहीं बोला तुम जाके उसको अपोलोजाइज कर, तू करता सच्चे दिल से अपोलोजाइज? मे बी नॉट, बिकॉज हमें कैसे पता कि हर बंदे की दिमागी हालत 5 हफ्ते बाद इन अ हाउस इज अ कैप्टिवेटिंग रियलिटी टीवी शो, इसलिए साइकोलॉजिस्ट रखे हैं वहां पर, साइकाइट्रिस्ट रखे हैं, वजह के लिए रखे हैं ना, इन केस यू नो यू फील अ बिट अनस्टेबल. सो आई एम नॉट गोना रिस्क दैट. That मैं अपने आप को, मैं रिस्क पर डालूं अपने आप को. So I will scream and say leave me alone. I will say, ask for help. इसलिए मैं चला रही थी, please leave me alone, stop coming behind me. And वो जो आपको दिखाया हुआ है ना सीन के ऊपर, that's just a fraction of it. It was a very long time. वो पूरा दिखाया ही नहीं उन्होंने. But did you talk to Ram after the show? Because they made, everyone said he needs to talk to me and apologize because ये नहीं अच्छा लगेगा to fix it. तो मैंने बात की थी, and जब मैंने बात की थी, of course I'm not that type of person that will hold grudges. No, मुझे और लड़ना है किसी के साथ. I want to leave the house with good memories. ठीक है? Of course हम लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जो भी है, but I want to leave with good memories in that aspect. And he said sorry, but मैंने उसको ये पूछा था सवाल. I said, Ram ji, if Chamola and Yogesh and all these people didn't tell you that आप गलत हो, and आप बहुत गलत हो, and you should apologize, तो आप apologize करते मेरे से, because I don't feel it was a genuine apology, to be honest. मुझे नहीं लगता था ये genuine apology है. Okay, but फराह खान की जो पार्टी हुई, उसमें हमने आपके ग्लिम्सेस के साथ साथ एक और बंदे के ग्लिम्सेस देखे. अर्जुन कपूर के साथ कहीं ना कहीं डेटिंग रूमर्स भी कहीं ना कहीं उठ के आ रहे हैं. व्हाट डू हैव टू से? पर जो ब्लश था आपका अर्जुन को देखते ही, जब वो एज अ जनता जूरी आए थे, वो क्यों था? मतलब हमें पूरा बैक स्टोरी जानना है. I was embarrassed. Of course, मैं embarrassed हो गई थी जब वो आ गया था, and they were talking about the Kaleshi corner and everything that was happening. हाँ, party, Farah ji की जो wrap up party थी, it was a fun party. We all had a lot of fun, and I just honestly feel like, यार जो private life होती है, privacy होती है, वो तो होती है ना. That's something that I don't want to discuss with anyone what I'm doing. And मेरा नाम तो सबके साथ जुड़ा हुआ है. I feel मेरा नाम इस जुड़ा हुआ है सबके साथ, मतलब in the sense where everyone is talking, okay, am I with this person? I'm talking to this person. So
let's just leave it at that. Okay, but I would say you guys look very cute together. ये भी मुझे सब कह रहे हैं. I'm getting loads of messages also about that. Yeah. I think I look cuter though. Yeah. I think definitely That I you look do. cuter. And hotter. And hotter. Yeah. Sorry, Arjun. Also, ये जो चमोला के साथ जो केमिस्ट्री बिल्डअप हुई है, किस कह लीजिए, यू नो, सब लिप लॉक कह लीजिए, काफी वायरल जा रहा है ये सब. हाउ डू यू टेक इट, इतना अटेंशन जो मिल रहा है? You know what? मैं कल पार्टी में थी. I went to a brunch party. Yeah. And literally all the guys that came up, they were just like, Pam, we love you, we love you, we love you so much. Oh my God, it's amazing. So all the men that came up to me was like, oh, you and Chimola, we love you. And I was like, आप लोग के blood फूट रहे होंगे. You're having so much excitement. दो लड़कियां, hot, gorgeous लड़कियां साथ. And they're enjoying it so much. And जो लड़कियां थी, and all the women were like, oh my God, you and Arjun look so good together. Oh. You look so nice together. It's so nice to see a good-looking couple. And I'm just like, okay. And they were just like, and he's so hot. So the women Yeah. were just like loving the fact that they think Arjun is a gorgeous guy, and they're loving the fact that it's you know, like we look so good together. And the women and the men are just like, oh, Chamola, hashtag Pomola, oh my God. And I'm just like looking at the expressions and I'm like, ha, maze karo. Wow. But you know, ये तो लॉकअप की बात हुई, but I also want to know you personally, you know, आपका family और you know, how did you start up in this entertainment showbiz business? थोड़ा सा अगर background थोड़ा सा हमें दे आपकी journey का. I'm an entrepreneur. I have a property portfolio. Okay. I buy and sell properties, but mostly मैं probate properties लेती हूँ. The properties are in very bad condition. We have a renovation company. I will do them up and then we will resell it or flip it, or we will rent it out. Okay. So that's the main business. And family are into the alcohol business from a long time. तो ये मेरा जो ये I've always been the most charismatic person in the room. मतलब I will walk into a room and I will know can vouch. everybody. Yeah. हाँ, तो वो attention मेरे पास, I always got this attention. मतलब I will walk in and people will notice me. So Yeah. वो attention हमेशा मेरे पास होती थी. I always used to have it. I was always like, you know, just full of this charisma. Spunk. हाँ, Yeah. yeah, personality, spark, जो भी आप बोलो. And I used to, every time I used to go out, always, you know, people would want to be in my company. So it started off with, मैंने beauty pageants वैसे करी हुई थे. I was doing some modeling as well with my work because I thought, you know what, जो काम होता है ना वो थोड़ा boring हो जाता है थोड़ा सा. It's repetitive. And this is fun things to do, you know. So I worked with brand deals, मैं consulting करती थी. I was very big on the social media, collaborating with businesses, with companies. Then I got into Miss Universe Dubai. UAE World जीता. उसके बाद I got noticed for Desi Bling. I was scouted because they're like, ये लड़की lives this lifestyle. She's, you know, she sticks out. She's flamboyant. And Desi Bling, I fitted very, very well for that character. And they wanted me. But when they first saw me, they were looking for Indian cast. तो मैंने उन्होंने सोचा मैं अरबी हूँ. मैं इंडियन नहीं हूँ. So then they saw me a few weeks later and मैं हिंदी में बात कर रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ. अच्छा. So मैं हिंदी में बात कर रही हूँ and then they asked my friend ये लड़की इसका नाम क्या है. And then they found me, I think on Instagram, they inboxed me. And then I connected on a call with them. And from there, they asked me, do you want to do this? And this is the cast members. And most of the cast members, Dubai छोटा है, हम सबको जानते हैं. Everyone knows everyone in Dubai. Yeah. They casted me and I was like, I know half the people there, so why not? So I got onto this show. Uske baad, honestly speaking, I'm the only person, first of all, I'm the only person in lockup who's a Netflix face on a Netflix platform. और कोई नहीं था वहाँ पर. कई लोग जैसे राम जी हैं, आप you were saying 30 साल हैं, 35 साल, बाकी you know you have Harshad Shwangi, all of these people have been in the industry, acting industry, मतलब 15 से ज़्यादा. Agreed. But they've never done a Netflix platform. I've done a Netflix platform, but 2 shows back to back, which are #1 global. Wow. So it's insane because, you know, June, Desi Bling, July, Lockup, 2 shows back to back. Matlab hui nahi hai and dono #1. So that was a big achievement in itself, a great achievement. Abhi I'm thinking maybe main teesra bhi kari leti hu. Third time lucky, Netflix, the global #1. And so that's a huge achievement in itself. I'm happy that I did that. It's been a very interesting journey for sure. When did you realize that now you are viral? वो moment याद है आपको कब था?
Desi Bling. The Yeah. reels were insane. Yeah. So क्योंकि promo जो आ रहा था Desi Bling का, I was in the majority of the promo. True. But Yeah. all the promo was me. Yeah. So when that came out, I was thinking, okay, ठीक है, this is Hmm. going to be insane because I'm in every single promo because I'm entertaining. So it was catchy for everyone to see that. Hmm. I'm here in these promos, and then when the reels जो कटी हैं, उसमें जो बातें हुई हैं, and it's drama. See, reality TV show in UAE, in Europe and London is very different. It's very like drama jitna ho, you know, show sharaba jitna ho, kalesh jitna ho, they Kalesh. love it. Yeah. But in India, it's very different. They like this entertainment side more. Yeah. So I'm happy I got to figure this out. Yeah. Because मैंने research इतनी की नहीं थी, and I just literally came on 5 days before we started shooting. Oh. So I didn't get that time to prepare myself. Yeah. So वो जो मैंने सारा कुछ जो कितना जो सीखा है मैंने, वो शो के अंदर ही सीखा है. So I'm happy I gave that entertainment, but Desi Bling was when it went crazy, and I think it was just like this wow factor of, you know, from the shoes to the bags to Yeah. the jewelry to the clothes to the cars, Yeah. that lavish life. You know what it was just like, wow, we want this, we want to see this. And उसमें मुझे कमोला का बोला गया, I was the villain, I was the vamp. Then it turned around and then I became this nice person, but actually I was picked on the most. Yeah. I had Totally. 4 mean girls at me, and मैं Pachari Pomala, you know, fighting and sticking up for myself. Yeah. And यही मैं कर रही थी Hmm. throughout the whole show. Yeah. And उसमें again I got disloyal people around me that, you know, broke my trust, and they were not true friends in there either. Hmm. जो सेम लॉकअप में हो, but लॉकअप में I got to show my fun side and ये हंसी मजाक जो मैं रोज करती हूँ, that my friends love. Like, this is Pamela Serena, sassy, funny, entertaining. I'm full of sass, Yeah. and that's why everyone loves me. My friends love me because of that. I got into lockup because the Netflix people loved me so much. And yeah. Desi Bling was number 1, and they're Yeah. like, एक बंदा तो चाहिए हमें Desi Bling से, just to make the show even more Yeah. insane and crazy. And then they were just like, they all said, Pamela, we want Pam. We want her. They didn't pick anybody else from Desi Bling. Yeah. They just wanted me. When they contacted me, I was like, okay, interesting, captivated करूँ या ना करूँ, I'm not sure. Yeah. And then I was like, you know what, Pam, just do it. Just take the plunge, risk ले लो, कर लो. And I've done this one, and then I didn't realize how like funny I am. The reels Yeah. कटी थी, entertainment हुई, but the reels are insane. Yeah. तू बड़ा 21 years की थी. Someone called What the a British comeback. embassy. I'm an NRI. बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से. Yeah. Yeah. Wow. Wow. हाँ. Great. It's gone very viral, and I'm thankful to the fans. Right. Honestly, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया. I'm just loving it more than मुझे और चीजें करनी यहाँ पर इंडिया में, because the love I'm getting, इंडिया आपने तो मेरा दिल ही ले लिया. But हमारे सूत्रों के अनुसार Desi Bling 2 is on the way and Pamela is apparently a part of it. What do you have to say? I don't think Desi Bling can be not without me. Honestly speaking, Woohoo! Desi Bling, I am Desi Bling. Desi Bling cannot be shot without me, but obviously I can't say too much Yeah. about the season or anything that's going to happen. Not allowed. We've signed NDAs. But Pammi, hashtag Pamola, hashtag Pomala, Pamela Serena. I mean, Desi Bling's my baby. You know, Yeah. I started off with Desi Bling. It's Yeah. my baby, and really, it's me in the flamboyant, lavish lifestyle. Ye main hi hu. Yeah. I love fashion. I love clothes. I love dressing up. I love the drama. I love the kalesh. And I feel if I do season 2, then for sure I will put my entertainment and funny side to it as well, because the public loved it Loves so it. much, Yeah, you yeah. know. So I will, and you know, yehi hota hai when you first meet someone and you're on a show. कई personalities होती है ना, they दिखती नहीं है. Like sometimes you're doing a serial or you're doing a movie, and you could have a serious character in that. You know, you could be serious, or you could be funny, or you could be sad, or could be your हालात से गुजरे हो that ये Yeah. kind of acting करनी है आपको, जो भी करना है. But reality TV show, you show yourself. Yeah. And I'm happy that I got to show a few personalities. अभी और बाकी हैं. Wow. अभी मेरी romantic happy वाली भी, वो भी personality Oh आपने my देखी God. नहीं है. You don't know who I might be taking Desi Bling with me on the show. Wow. But
I want to show my other personalities. I think the public would like that. And you know what the thing is that I don't want to show all my personalities at once either. You know, with public जनता को भी देखिए, layers. हाँ, they need to be curious. तो layers दिखाने पड़ते हैं. एक ये layer हो गया, एक ये layer हो गया, एक ये हो गया. And I want them to enjoy and appreciate that as well, because Pamela Serena has many layers, many personalities, and I'm dying to, you know, show more. वाओ बट मुझे एक देसी ब्लिंग का जो सीन और इंसिडेंट याद है एपी जब आए थे आपके लिए गिफ्ट लेकर के यू नो और आप बहुत सरप्राइज थी उस गिफ्ट को लेकर के बट देन एपी सेड दैट पैमेला ने खुद ही वो चूज किया है गिफ्ट को योर थॉट्स I mean, आप खुद ही सोच लो, पूरे शो में मैं बर्किन्स एंड केलीज उठा रही हूँ हैंडबैग्स में, एंड इफ मेरा 4th ईयर बर्थडे तो मेरा ये बॉयफ्रेंड उठा, एंड 4th ईयर में मैं बेसिक शनेल हैंडबैग तो नहीं लेती, वो बेसिक शनेल हैंडबैग वो सबसे छोटा वाला मैं वो नहीं उठाती. ये बात आप मेरी मान ले. इफ इट वाज मी एंड इट्स माय 4th बर्थडे विद अ गाय, आई वुड बी पिकिंग अप a watch. I would be picking up diamonds. I would be picking up a Birkin, and not even a basic Birkin. After the 4th year, it'll be a croc Birkin. It'll be a croco, guys. So आप ये सोच ली, मेरी personality देख के आपको लगता है मैं basic Chanel handbag लेती और उठाती. No, maybe in the first year, but 4th birthday वो तो बनता है. Gifts जो होते हैं upgrade होते हैं, and birthday पर तो मिलता था मुझे सिर्फ, so वो तो मैं अच्छा लेती. Of course. Yeah. Okay, but also there are a lot of rumors about AP dating Crystal D'Souza. Yes. Do you know ऐसा कुछ communication आपके साथ हुआ है? हुआ है. I met her also at Tejas' birthday. She's a lovely girl, amazing, and I'm so happy for them. हमारा breakup अब हो गया 1 साल बाद, and obviously you guys also know I've moved on too. Yeah. So you know, each to their own, and they should be better in a relationship. So I'm very happy for both of them, and I'm happy in my journey as well. I'm at a very good place now, and I'm super happy. Right, but what conversation did you share with Crystal? थोड़ा सा अगर बताएं. You know what? I saw her. I complimented her. इतना conversation नहीं हुआ था because we was in a very big group. Yeah. And आपको तो पता था, Teja did not leave my arm that whole time for her birthday. I was right next to her. Wow. We had a lot of paps clicking and a lot of pictures. A lot of people have. मतलब मैं 8 साल बाद बॉम्बे आई हूँ. So it's been one of those. So I said hi to her. But she knows who I am, of course. उसको तो पता है मैं कौन हूँ. She said hello. I said hello back. We complimented each other, and bas. Then she left afterwards. Because I was staying with Karan and Teja. अच्छा. So I was there one night. I flew in just for her birthday. Wow. I flew in just for her birthday. It was a week before lockup. Yeah. I met some of the people from production the next day for a meeting. फिर मैं निकल गई थी. Okay. So yeah. Great. But I'm happy. Listen, हर बंदे का breakup होता है. Everyone breaks up. Everyone has a breakup in life. It's normal. But मेरे breakups में people are very. I think it's because he was initially on the show. Maybe that is such a big hype. Yeah. But वो सिर्फ appearance था. It was a small appearance because also with Desi Bling and the Vibe Bling, people need to see your lifestyle, and they need to see your life. क्या है? अभी a lot of people जैसे सतीश था, they showed husband and wife, उनकी बीवी, बच्चे, वो घर का वो दिखा रहे थे. And because मेरी शादी हुई नहीं है अभी तक, they had no बच्चे भी नहीं है, तो कितना शो करते हैं. बिजनेस मेरा लंदन में है, so इतना दिखा नहीं सकते थे. And they needed to see my lifestyle. उसमें they asked AP, can you be an appearance? और ex को ही दिखा देते हैं that you had a relationship and you're friends. So इसलिए वो उसने छोटी appearance की थी in that sense. But let's see, season 2 might bring something else. Wow, we are waiting for that. Okay, so now in the next segment, I want you to do a prank call, and who better than Chamola? I think हम चमोला को अगर एक prank call कर पाए, it will be great. चमोला को try करते हैं पहले. Yeah, babe, I'm on the flight. Babe, just quickly, I need to tell you something. Tell me. I got this message from this girl, okay? Some random chick, and she's like, I know you're staying in Soho House in the hotel, and I want to meet you. How can you pick Chamola over me? I really fancy you. I want to do things with you. What do I do? I don't know how she got my number. I'm so scared. Nothing, just block her. That's okay. Why is people getting all jealous about mine and your relationship? Because we made it up. We are too public. Babe, I swear, it's crazy. I don't understand. It's too public now. What do we do? This girl is going crazy over this. But that's okay, right? You मैं just क्या have to करूँ? मुझे block डर her लग रहा है. now. Will you come and see me? Oh, I wish I could come and see you tonight. But what are you doing? I thought you were going for Shreya's party मुझे tonight. पता नहीं मैं जाऊंगी या नहीं. But तू आएगी ना मुझे मिलने के लिए. As soon as you land, call me back. I'll
call you once I land. I love you. I love you too. Mwah. Bye. 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 Okay, we can ring Riaz. He'll pick up the call. Riaz, Riaz, listen. Yes, Pamela. Babe, I'm getting threatening messages from people. What messages? Threatening messages, Riaz. What the fuck? Who's messaging you? Oh, Who they're the telling fuck? me that I don't know. They're telling me they're gonna come. And I'm staying at Soho House, and they know I'm staying here. And they're gonna come and attack me. Nobody can attack you anywhere. No. So is the safest place. And Mumbai is safe. Don't मैं I'm worry. scared. I'm taking a flight back. मैं जा रही हूँ वापस. मुझे बहुत डर लग रहा है. Why? No, babe. Don't go. मुझे बहुत डर लग रहा है. I don't know what to do. तो podcast में हो गया तो उनको podcast में तो नहीं हो तुम. पॉडकास्ट में हाँ? कौन से पॉडकास्ट में ये podcast में सब prank calls होते रहते हैं. वो तो नहीं करोगे तुम. नहीं करनी मैं तुम्हें बता रही हूँ वो खत्म हो गई है पॉडकास्ट सच्ची बोल रहे हो? मस्ती कर रहे हो? सच्ची में सच्ची बोल रहे हो? सच्ची में मुझे डर लग रहा है कौन मैसेज कर रहा है? सब रैंडम हाँ WhatsApp पे कि नो उस पे? व्हाट्सएप पर आ रहे हैं मैसेज में पता नहीं नंबर किसने दिया मुझे बहुत डर है आई एम गोइंग बैक टू दुबई मैं जा रही हूँ वापस तुम इधर उधर नंबर क्यों शेयर कर रही हो? मैं नंबर नहीं शेयर मुझे नहीं पता कोई दे रहा है मेरा नंबर मुझे बहुत डर लग रहा है आई एम सो स्कैर्ड Where are you right now? Where are you right now? आई एम सो स्कैर्ड आई एम गोइंग बैक टू सोहो हाउस मुझे बहुत डर लग रहा है डर लग रहा है पूरे दिन पार्टी करते हो डर लगता है रात को शाम को डर लगता है तुम्हें मैं बस दोस्तों के साथ होती है तो मैं यूरी टॉकिंग आज ही तो अभी तो आया है मैसेज मैं तुम्हें 1 घंटे फोन कर रहा हूँ मैं पॉडकास्ट के बीच में पॉडकास्ट क्या करने जा रहा हूँ बालाजी का देखिए तुम्हारा पॉडकास्ट इम्पोर्टेंट है ये मेरी जान खतरे में है मुझे लोग मार देंगे सेफ है मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारी जान एकदम सेफ है आई एम प्रेइंग फॉर यू कहाँ है मैं तुम पॉडकास्ट पे जा रहे हैं पॉडकास्ट पे जा रहे हो और मुझे कोई गोली चला देगा मार देगा मेरी लाश देखोगे रियाज पागल हो गए कैसी बातें कर रही हो डोंट वरी डोंट चिल आउट I'm telling you but help me out here now I'm already late I'll help you out after I finish this shit finish this thing sorry हाँ ये इम्पोर्टेंट है जब तक मैं मर जाऊँ फिर मेरी लाश देखोगे तुम इम्पोर्टेंट है हाँ मेरी लाश देखोगे तुम अरे नहीं तुम्हें देखूंगा मैं रुको आ रहा हूँ मैं ये खत्म करके आ रहा हूँ मिल रहा हूँ मैं तुमसे मिलता हूँ ओके बाय so cute but उसने कहीं ना कहीं पकड़ लिया but still उसको पता था मोरा को नहीं पता था बोले कि तुम आ जाओ बस बाकी कोई नहीं आया चलेगा Yeah, babe. Hi darling how are you I'm good. How are you? good अच्छा सुनो हाँ जी। I'm gonna come around 11 tonight okay ठीक है लेकिन टाइम से आना before the cake cuts. what time you cutting I'll cut it around 11:30ish. okay listen okay they're making this whole plan against you that कोई आना नहीं चाहता from the inmates वो तो पता है मुझे. they may have this group made and वो group में they're saying that no one wants to come and they're telling me not to go and I said मैं तो जाऊंगी what's it got to do with you lot Send me the screenshots ना. Can you send me the screenshots? हाँ तो मैं ये okay I'll send it to you but सुनो तो सही fucking हाँ. आ कौन रहा है तुम्हारे दोस्त तो कोई है नहीं मेरे दोस्त बहुत है भैया. इन से मुझे फर्क नहीं पड़ता. तुम आ जाओ चुपचाप. क्या डिसाइड करेंगे मेरी पार्टी में कौन आना चाहिए कौन नहीं. पूरा इंडस्ट्री आएगा देख लेना तुम. okay ठीक है but I'm just saying who's coming from there who's confirmed कोई confirm किसने किया कि नहीं किया कोई नहीं आ रहा है इनमें से. okay मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ माधुरी जी तू भी आ आ रही जा. सरप्राइज कर रही तुम्हें हाँ और क्या बोलते हैं इनके स्क्रीनशॉट्स तो भेज जरा मुझे. and हाँ listen to me anyway you're lucky because I'm there तुम्हारी पार्टी तो मेरे साथ ही शुरू होगी और end होगी so you're और in क्या अपन नाचेंगे दारू वारू पिएंगे इन शूज. you're in luck darling love you And look pretty and hot because the media is going to be there. I'm hot and I all always look celebrities pretty. are going to be there. okay done ठीक है big kiss ठीक है. bye Bye. so quickly I have few statements आपको उन oh पे my react god this, I don't know which one is entertaining more अभी 3 दे दे आपको I think तीन ही entertaining है yeah so ये statements फटाफट कर लेते हैं. हाँ Akanksha Chaudhary was jealous with your closeness with Yogesh.
I wouldn't say she's jealous in like a mean way. Okay. Because उसको पता था that मेरा योगेश का जो relationship था, it was more like a bro sister code. Yeah. And I was super close with him. I was close, a little bit close with her, but हमारी जो locker room की जो story हुई थी, she got a bit confused about that. उसने Yeah. सोचा that मैं चाहती थी उसको eliminate करने के लिए और मैं time ज़्यादा जान के लगा रही थी. But it wasn't about her. I'm just self-obsessed with myself. I own it. मैं से पूछ रही थी मेरा hair and makeup कैसा था, अच्छी लग रही थी, खुश लग रही थी, sad लग रही थी. मैं यही बातें कर रही थी. It was just all about me all the time, guys. आपको तो पता है ना, I'm self-obsessed with myself. तो Yes. क्या करें? मैं own तो कर रही हूँ, admit Yeah. कर रही हूँ. But जान के वो भी चुराता था उसको थोड़ा beginning में हम चुराते थे and उसका face देखते थे, then वो भी हंस पड़ती थी. अच्छा. So I think in that sense, obviously, you know, she's protective over Yogesh that मेरा है, and फिर Oh. जानबूझ के मैं भी थोड़ी उंगल दे देती थी, just entertainment के लिए. Lockup was a biased show. I wouldn't say the makers made it biased, वो नहीं मैं कहना चाहती. I would say एक घर में झुंड था and एक दूसरे को लोग जानते थे. They had their levels of importance, मतलब you know priority. जैसे राम जी अब खाना उसका मिलता था, पता नहीं 30-35-40 साल के एक्टर है, कितना साल पता है, कितना 30 साल? years, yeah. 30 years के एक्टर है वो, so he has that priority. Yeah. And then Harshad, Shivangi, Dheeraj, so they have their own faces. Then they had the content creators. Then they had the new people in, the Yeah. younger generation in. So that ways, I think priority तो थी वो. That ways it was biased. मतलब script कोई नहीं था वहाँ पर. Yeah. And उसमें I wouldn't say the winner or anything. It was biased like that. नहीं, ये show biased इस तरह नहीं था. But people inside the show जो थे contestants and inmates, that for sure they had their own opinion and they were biased in certain things. Yeah. You know, for example, like सबने शिवानगी के लिए वोट किया, Hmm. but the inmates were biased in that decision. But Yeah. आप ये देखो ना that मेहनत किसने की है शो के ऊपर, Yeah. content किसने दिया है शो पर, रोज every day on, you know, like a guard dog watching everything come to attack, Yeah. come to fight, और जो भी आप कहना चाहते हैं. Yeah. कॉम्प्लीमेंट भी दे रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बट कॉम्प्लीमेंट मैं ये दे रही हूँ that who put that input in the show. Yeah. उनको मिलना चाहिए ना. But that decision was biased क्योंकि what someone वो अच्छी लड़की है या she's in industry or she's a Balaji face. No, it Yeah. doesn't work like that. Yeah. आप ये देखो ना, गेम में कौन खेला है अच्छा. Lockup stay was not hygienic. और ये I'm talking about the washroom conditions जो आपने I think कहीं ना कहीं बात भी करी है. Tell us about it. Zoom. सोच के मुझे रोना आ रहा है फिर. Conditions, हाँ, it was not hygienic, guys. नहीं hygienic था, बहुत गंदा था. And we had our own washroom. लड़के had their washroom, लड़कियाँ had their washroom. Yeah. फिर भी it was unhygienic या पता नहीं लोग on purpose चीजें करते थे. Like at one point the handheld had potty on it. The handheld shower had potty on it. It was so disgusting. मैं तो जाके मर रही थी, मुझे उल्टी भी आ रही थी. I was so sick because of that. And मुझे phobia हो गया था bathroom use करने का. Honestly, at one like, it was super bad like that. But I don't know किसने जान के किया है. Because I can't put things past Shilpa जी भी वो जान के भी चीजें करती रहती थी. So it could have been her, maybe it was you, I don't know, it could be. So कोई चीजें हैं that लोग कर रहे थे on purpose also. I don't know जो भी था, but that was very unhygienic, yes. Right. Ram Kapoor used Varun for his game. Yes, he did. And Varun, honestly, तुम इतने manipulated हो गए थे and you turned against me, Pamela Serena, जिस इसके चक्रों में and end में क्या हुआ? राम जी ने तेरी ले ली, हाँ. Right. Varun used Pam and Akanksha Chamola for content. मैं उस शो में थी flavor in the sense where it was my accent. फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ पंजाबी mix हो जाती है, फिर हिंदी भी mix आ जाती है. उस combination में it was refreshing for the audience to see. जो मुझे बहुत feedback लोगों से मिला है that we loved the fact that you were doing these things on the show because it's refreshing. बाकी everyone was normal. Yeah. And like श्रेया का game था, उसको सिर्फ लड़ना था. She was just fighting with everyone. But I notice in India, audience don't want to see fighting and people cussing each other and swearing at each other. उनको नहीं चाहिए ये content. They want happiness. They want entertainment. Yeah. उनको चाहिए ये. So I feel I gave everyone content in that way a lot. Yeah. मैंने चमोला को भी content दिया है, मैंने वरुण को भी content दिया है. वरुण मेरे साथ था paired in the cell. जब I got close with चमोला, मैंने उसको छोड़ा नहीं है. I involved him in our trio. Yeah. बाकी सब pairs में थे. Yeah. But I didn't do that. I was Yeah. like, Varun, तुम भी हमारे साथ हो. Be with us and join with us. मैंने उसको ऐसे छोड़ा नहीं अकेले. Yeah. You know, and people don't see this, what I did. Otherwise, मैं चुमोला के साथ चली जाती. I could do my thing. जैसे राम and धीरज था, शिवानगी and हर्षद था, योगेश and आकांक्षा चौधरी थे. Yeah. या शिल्पा जी श्रेया थी. Yeah. मैं भी कर सकती थी.
But I didn't. I kept him in my trio, so वो अकेला ना पड़ जाए. Chamola was unhappy with your bond with Shreya. Obviously, उसको थोड़ा तो होता है jealous feeling because you know वो सोचती मैं उसकी हूँ, मैं उसकी रहूँगी, and then Shreya will take me away from her, and then फिर उसको वो importance ही मिलेगा. तो वो तो था खींच खींच पैम इधर आ जाओ hang with us, and मैं एक ही बंदी हूँ यार. I can't split myself with everybody. Yeah. So you know थोड़ा सा time सबको दे देती थी मैं. So now we have our next segment called the O Teri Lifestyle segment, जहाँ पे हम पैम से थोड़े lifestyle related questions पूछने वाले हैं. So first question is, आपके जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, what do you do with that? Do you donate it या क्या करते हो आप पुराने कपड़ों के साथ? Okay, so honestly speaking, कई चीजें होती हैं जो fashion के अंदर वापस आ जाती हैं. तो most of my stuff is designer. Right. So if I feel I can keep the pieces after the fashion comes back, but most of it मेरी friends ले जाते हैं मेरे कपड़े, and if anything else मैं donate कर देती हूँ, Right. फेंकती नहीं हूँ. अपनी luxuries, you know. Oh जो sorry, buy- and I have a luxury closet which I'm just signed up to. तो मेरी luxury closet में online you can buy things also. Oh, wow. It's called the luxury closet. Great. अपनी लग्जूरियस चीजें जो होती है, एक्सपेंसिव बैग्स एंड ऑल, उसको स्टोर कैसे करते हो आप? कुछ टिप्स अगर टू द फैंस आल्सो इफ यू कैन गिव, और आप कैसे स्टोर करते हो? Yes, so every day when I wear my bag, बाद में जो मेरी maid होती है, she will clean the bag properly. कोई chemicals नहीं use करना bag के ऊपर, because वो chemicals से खराब हो जाते हैं. Okay, so you must clean the bag and उसमें dust bag में डालना है. You put stuffing in it so shape ना खराब हो जाए. Then dust bag के ऊपर रखना, and then I put it on the shelf. I cover it. मैं display पर bags नहीं रखती because वो damage हो जाती हैं. And मेरा जो apartment है, it's a corner unit. तो sunlight भी खराब कर देती है, you know, the leather it can fade. अच्छा, नए कपड़े खरीदने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड है या रिसाइकिल या DIY ये सब यू नो प्रेफर करते हैं? नए कपड़े, of course I love shopping. मुझे तो बहुत मजा आता है. It's like retail therapy. जब मैं जाती हूँ and then I see something, and जब when I like something, everyone says my face lights up like a light bulb. I'm like, oh my god, this is so nice. यू नो, लास्ट मिनट आउटफिट ब्लंडर्स कभी हुए हैं या कोई ऐसे इंसिडेंट्स जो आप शेयर करना चाहें कि पहनना कुछ था और यू नो वो मटेरियलाइज नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द मोमेंट? Actually, I've been very very lucky. हमेशा जो मेरे outfits हैं, they always pan out. But एक बार, okay, just एक बार ही हुआ है, सालों पहले. मैं पार्टी पर गई थी and this girl had the same dress on as me. Trauma. I was like, oh my god. I went back to the hotel, I changed and I came back because I cannot wear the same outfit unless it's twinning. And हम twinning कर रहे हैं and plan हुआ है या कुछ fancy dress है, मगर that otherwise no, because I have to stand out. I have to be number one, especially I have to look hot. Okay. Lastly, we all know your, you know, lifestyle and all, but कभी laundry related कुछ goof ups हुए हैं आपके साथ? कभी try किया हो? I know, you know, looking at your lifestyle, that's not possible, but still. I'm sure हाँ, dry cleaning में बहुत खराब हो गए. So the Loro Piano, for example, कपड़े जो होते हैं brand, they shrink very easily. So there's certain dry cleaners we have to use for that. Missoni वो भी shrink हो जाती है काफी very quickly, so we have to be careful with that. कई बार हो चुका है. My clothes have shrunk, of course. वो तो बहुत होते हैं, especially like all the wool and stuff. I've had many issues, a lot of issues with that. But एक बार मुझे ये हुआ था that मैं travel कर रही थी in Sardinia and I was at the airport and मेरा suitcase चोरी हो गया, पूरा suitcase उसमें सब कुछ था. They lost it और पता नहीं क्या हो गया, and it was gone completely. And I had all my summer clothes, my bags, you know, my cute outfits जो मुझे पहनने थे. Shame. Yeah, Okay. that मैंने बहुत अफसोस किया. Honestly, I was so sad. Yeah. It's like the worst thing that could happen to you on holiday. Of course. Yeah. Okay, so this was our podcast. How was it? कितना मजा आया? हमें तो बहुत हंसाया. I think Pamela ने. You are so fun. What do you have to say to all the viewers who are watching you? I just want to say, guys, मुझे इतना प्यार please हमेशा दो. Please don't troll me because I don't like to be trolled. I love you guys so much and मैं चाहती हूँ कि मैं और projects करूँ और India और I make you guys proud. I am a proud Indian and I'm Indian at heart. And India, मेरा दिल आपके पास है. आपने ले लिया मेरा दिल. Hi guys, my name is Pamela Serena and you're watching O Teri Presents Spaghetti Unlimited.